Uh, as the Finance Minister explained, the objective of this proposal, which is the GST rate structure rationalization, accompanied with process reforms. So the first request I will have is to have the appreciation of the proposal in the manner in which it has been prepared, in order to not distract ourselves with issues which will be an outcome of this process, but the core principle of this exercise needs to be appreciated in totality. We have estimated a figure. We expect that the net fiscal implication, we would not call it as a revenue loss because that doesn't seem to be the correct terminology, but net revenue implication of this proposal is expected, we have estimated it to be around 48,000 crores. This is on the consumption base of 23-24 because that is where we had all the segregated data. What I would also request is to have to appreciate this exercise better. It's important to also understand why looking at a particular number of revenue implication and highlighting it in a manner which is not proper may not present the correct picture of this exercise. The reason being, one, typically the rate rationalization exercise would result in buoyancy effects. We do expect, as mathematically one may calculate based on consumption of 23-24, but economically that is not how outcomes will evolve. And we do expect buoyancy to play a major role because of this rate rationalization exercise in enhancing the revenue. In addition, there is also an effect on the consumer behavior. What he spends on and how much does get influenced by price, which is going to be expected to get positively influenced by this exercise. We also expect compliance to improve due to this exercise. Madam explained to you how rates which were at different levels, where classification issues would be rampant, like sectors like food or transport, auto parts, etc. Once rationalized, it will improve and enhance compliance because many of these disputes would not necessarily result in revenues, but would linger on and would end up having a lot of resources, both of the business and the department, in struggling to settle those disputes. So compliance would also have a very positive effect on the revenue generation. Finally, there is a technicality that when the rates change, the rate of the value chain itself changes, and tax, you know, is paid through ITC and cash, and the actual implication of that will have to be worked out. I would just like to highlight a number from before just to explain how these changes do play out. For example, when earlier the average rates were around 15.5 in the earlier part of the GST, the compliance in the form of GST TB was around 85 to 90%. Now the compliance has improved to almost 97% as the rates have come down. We do expect these positive changes will have and we believe that in this entire exercise will be fiscally sustainable both for center as well as the states. 54. Yeah, good evening, ma'am. Shishir from Hindu Business Line. My question is about the anti-profiteering because now so much rate reduction is there and we do not have the anti-profiteering mechanism. As of now, we understand that GST 80 can take only the pending cases and the cases directed by the courts. So what kind of mechanism we are going to have? And the second question is about the clarification on the revenue implication, that 48,000 crore is on annualized basis or just for the FY26, ma'am? On the first question of anti-profiteering, just to give you a couple of statistics, that since inception, under the arrangement of anti-profiteering, which is no longer in place now, only around 704 cases were registered with the authority, and 60% of the cases were initiated within the first 3 to 4 years of implementation, and the total profiteering amount that was alleged was around 4,362 crores in these 704 cases. So we expect that last time too, these data shows that industry has largely passed on the benefits of rate cut. At that time too, the industry made public statements and committed, and you would have heard and you would have seen that a lot of industries have already come out and have committed that they
तो इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी को ईज आउट कर दिया गया है। कई सेक्टर्स में जीएसटी को ईज आउट कर दिया गया है। क्या क्या सस्ता होगा, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। यह मत देखिए कौन सी चीज कहां से कहां आ गई है, लेकिन सिर्फ 2 स्लैब होंगे, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और 12 और 18% वाले सामान अब 5% जीएसटी में आ गए हैं। सस्ता क्या होगा? अल्ट्रा हाई जो टेम्परेचर वाला मिल्क सस्ता होगा, ब्रेड, छेना, पनीर, नमकीन, भुजिया, बटर, घी, कॉर्नफ्लेक्स और इतना टूथपेस्ट, टेबल वेयर, किचन वेयर, शैम्पू, हेयर ऑयल, ज्यादातर कंजम्पशन गुड्स जो है वो सस्ती हो जाएंगी। एक बहुत अच्छी खबर है। 2 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, वो है इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। दोनों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। यह इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। 40% की जो कैटेगरी है उसमें वो चीज है जो आप बताया गया है, जिसमें पान मसाला है, सिगरेट है, गुटखा है, जर्दा है, च्यूइंग टोबैको है, एरिएटेड वाटर है, और फिर कैफिनेटेड बेवरेजेस है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, मिड साइज लार्ज कार, फिर इसके अलावा हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट जो पर्सनल यूज के लिए है, यॉट है, इनको 40% के जीएसटी में लगाया गया है। बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई हैं। रेवेन्यू लॉस नहीं कहा जा रहा है, इसका एक फिस्कल इंप्लीकेशन होगा 48,000 करोड़ का, 48,000 करोड़ का। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की जीएसटी काउंसिल बैठक में देश के जितने भी राज्य, सबके फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद थे। सभी लोगों ने मेहनत करके, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसके ऊपर नोट किया है। ये वित्त मंत्री ने कहा है। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पीयूष, वेरी क्विक टेक, संक्षेप में 3 पॉइंटर्स में बताइए अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? बिल्कुल निशान, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जो स्लैब थे वो सिर्फ 2 कर दिए गए हैं, अब 5 और 18% का स्लैब होगा। और अहम बात यह भी है कि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों वाली जो चीजें थी जिन पर 18% या 12% जीएसटी लगता था, अब महज 5% जीएसटी लगेगा। और कई वस्तुएं ऐसी भी हैं, कई सामग्री ऐसी भी हैं जिन पे 0 कर दिया गया है। और ये एक तरह का एक बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि जब 2017 1 जुलाई में जीएसटी आया था, उसके बाद से अब ये 56वीं बैठक थी और इस बैठक में एक तरह से जीएसटी का पूरा खाका ही बदल दिया गया, पूरी रूपरेखा बदल दी गई। और सबसे जरूरी बात कि पीयूष, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और इसमें किन किन का जिक्र किया है, यह रोचक बात है। प्रधानमंत्री ने कहा है कॉमन मैन, फार्मर्स, एमएसएमई, मिडिल क्लास, विमेन, यूथ, फिर इसके अलावा आर सिटीजन्स, इन सब की बात की है। प्रदीप भंडारी बीजेपी से हमारे साथ, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आप बताइए आपका इस बार पहला रिएक्शन, और सच बताएं, आपसे जानना चाहूंगा कि आज ये एक और अनप्रेसिडेंटेड चीज है कि 2 दिन की बैठक है, पहले दिन ही इसको डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से ये वादा किया था देश को कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे जो कॉमन मैन, मिडिल क्लास के जेब के अंदर ज्यादा पैसा डालने और उनकी डिमांड और उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के संबंध में किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एज अ कॉमन मैन अगर आपको कहना चाहूंगा कि जो जितने भी कॉमन मैन से जुड़े हुए आइटम्स हैं उन सबको 5% स्लैब में लाया गया है, भले वो पहले 12% स्लैब में हो या 18% स्लैब में हो। साथ में जो एस्पिरेशनल क्वेश्चन वाली चीजें जो पहले 28% में थी, जैसे एसी और बाकी सब चीजें, उनको यूनानिमसली उनके स्लैब को भी घटाया गया है। तो मेरे हिसाब से 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन ये आम आदमी के लिए सबसे बड़ा प्रो पुअर, प्रो मिडिल क्लास रिफॉर्म है।